जय जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स दिस बासुदेव पंडा वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश पिला माने कलिंग शिक्षा साथी योजना जहाँ को आम एजुकेशन लोन फ्री एजुकेशन लोन इन ओडिशा बोली भी कहि परिबा तार नुआ नोटिफिकेशन नुआ गाइडलाइन ऑलरेडी आसी जाइछि तो नुआ गाइडलाइन रे कोन परिवर्तन हेछि किए अप्लाई करि परिबो क्यों बैंक रे अप्लाई करिवे तार क्राइटेरिया कोन एलिजिबिलिटी कोन केते लक्ष टंका पर्यंत आम अप्लाई करि परिबा से ऋण सुझिवा केमती केते परसेंट इंटरेस्ट लागिवो ए सबु जिंस को नै करि पिले ए वीडियोटा तो वीडियो टू शेष पर्यंत देखिले हम निश्चित भाबे सबु जिंस बुझि जिबा पिले कोठी केबे केमती अप्लाई करबा आ एलिजिबिलिटी भी कोन आ माने इंटरेस्ट रेट कोन रहिछि तेनो बिल्कुल स्किप करबा नै नुआर जदी देखुचे गोटे छोटिया रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब कर दवा वीडियो को लाइक आ शेयर कर दवा जापर समस्त को पाखरे पहुंची पारिबो ओके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस न कर पिले ए भलिया वीडियो हमको माने नोटिफिकेशन आसीबो नाही सो एटा होची देख पिले दिस द नोटिफिकेशन जोटा माने 23 तारीख गत 23 तारीख रे अपडेट हेची तो एठी लिखा हैला गाइडलाइंस फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कलिंग शिक्षा साथी योजना an educational loan availed by students of Odisha pursuing higher studies जो पिला माने उच्च शिक्षा पढ़ुचंती स्पेशली यूजी अंडर ग्रेजुएट माने +3 एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएट टेक्निकल एजुकेशन हे पारे आईआईटी इंटीग्रेटेड कोर्स मध्य हे पारे तो जे कोन कोर्स तुम पढुछ तुम अप्लाई करि परिबो तापर आसला पिले गाइडलाइन ये होची बैकग्राउंड ए बैकग्राउंड ऊपर को बैकग्राउंड जानिबा दरकार गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कलिंग शिक्षा साथी योजना since 2017 ru ya chalchi benefiting students in larger number by providing them interest subsidy at such a rate that the next interest payable by the student net interest after the moratorium period becomes 1% per annum on education loans up to 10 lakhs 10 lakh पर्यंत 1% ये थिला पुराना गाइडलाइन पिले एबे जीरो हो जाय सेटा भी देखेबी हैं higher studies within India, भारत भितर जो माने पढ़ुचंदी the existing scheme has now been revised to provide 100% subsidy 100% subsidy bile okay to the students on their education loan on for pursuing higher studies within India and abroad जो 1% थिला से 1% अब जीरो हो गला वर्तमान 100% subsidy बिल्कुल भागवर किछ नै तो यार स्कोप देखो ये होची स्कोप एटी कोन हला देखो the scheme offers 100% interest subvention माने इंटरेस्ट जमार दवा पे पड़िबो नै relieving student from paying interest on education loan with a repayment period not exceeding 15 years maximum 15 वर्ष 15 वर्ष भीतर पिले तुमको ई पैसाटा सुझिबा को पड़िबो जेति की माने 15 लाख उठैछ 15 लाख ही दबो तम ताठरो अधिका दबो नाही नंबर 2 the scheme is applicable on all education loans from all the schedules bank of India प्रत्येक बैंक हला जेतिक बैंक एजुकेशन लोन दउचंती सब बैंक रे ए लोन आमे अप्लाई करि परिबा ओके स्पेशली को बैंक सेटा भी कहबी इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर केएसएसवाई इज एडमिसिबल ओनली वंस ईदर फॉर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड तीन कोर्स देखो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड under the scheme interest subsidy on education loan is provided for a maximum amount of rs 15 lakhs kete 15 lakh in case sanctioned loan amount is above 15 lakhs then interest subsidy will be limited to loan amount of rs 15 lakhs only जदि 15 लाख रु अधिका भी आमे करि परिबा 15 लाख रु अधिका भी करि परिबा बट 15 लाख रु अधिका हेले हमको माने इंटरेस्ट लागियो बट 15 लाख पर्यंत जीरो इंटरेस्ट ओके नेक्स्ट रहिला the scheme will be applicable for the beneficiaries of CSIS scheme education loan scheme of India Banks Association IBA or to avail the benefits under KSSY scheme next आइला पिले देखो claim of interest एठी कोन रहिला claim of interest subvention for the students whose annual parental income is up to rs 4.5 lakhs बापांकर दरमा जद किंबा मांकर दरमा जदी 4.5 लाख रु कम अछि shall be covered under CSI scheme during moratorium period and subsequently from KSSI. Students whose parental income from all sources is within 4.5 lakhs to 8 lakhs, the claim of interest subvention will be covered under SSI. जदि 4.5 लाख रु 8 लाख टंका भितर अछि टोटल इनकम
ताहेले तमे पिले ए जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम केएसएसवाई रे अप्लाई करि परिबो ओके तो ये होची आगो 4.5 थिला एबे 8 लक्षटा जोड़ा हेची बिले under KSSY scheme, the interest payable on the education loan for both the moratorium period, that is course period plus 1 year, and after the moratorium period will be borne by the government of Odisha. किए देबो तमरो interest government of Odisha दबा पिले तुमको माने आमे जो 0% interest कहूछु हमर जहा interest रहबो सेटा government of Odisha दबो हां applicable academic year को year पइडा The modified scheme shall be applicable from the financial year 2023-24 2023-24 पइडा It covers fresh bank loans availed on or after 1/1/2023 1/4/2023 कहले हमर जो अप्रैल 1 तारिख रो जो माने लोन नहीं चंती ता पई एप्लीकेबल हबो देन loans disbursed by banks prior to 1/4/2023 shall be covered under previous criteria 1/4/2023 आगु जदि के लोन नहीं ची केएसएसवाई योजना रे तारो सेटा प्रीवियस हिसाब रे काउंटिंग हबो वर्तमान आइला पिले एलिजिबिलिटी रे कोन कोन अछि देखो एक मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ ओडिशा ओडिशा रो रेजिडेंट होबा दरकार दुई फैमिली इनकम अप टू 8 लाख पर एनम फ्रॉम ऑल सोर्स सब सोर्स मिचेले 8 लाख रो अधिक होतबा कथा नो नंबर 3 must have secured admission to a higher education course in recognized institute of India or abroad okay so must have secured admission से पिला पढुथिले ही लोन पाइबो नहले पाइबो नाही नंबर 4 must have availed loan from the scheduled bank under CSI education loan scheme of the Indian Banks Association IBA रो Indian Bank Association जो CSI से IS अछि जोटा education loan system सेइथिने हु अवेल करथिबार अछि नंबर 5 applicable only since either for undergraduate or postgraduate degree course this is also admissible for integrated course so graduate postgraduate and integrated ए तीनटा कैटेगरी पिला अप्लाई करि पारिबे पिले नंबर 6 रे कोन छी interest subsidy under this scheme shall not be available to those students who discontinue their course midstream मझिरे जदी कोर्स मझिरे पाठ छाडीबा ताहेले सब्सिडी तमरो कटिबो नाही or who are expelled from the institution on disciplinary or academic grounds or give up Indian citizenship during answer of the period जदि मझिरु पाठ छाड़े जदि कॉलेज रु ताको बाहर कर दिया जाए किंबा जदि भारतीय नागरिकत्व छाड़े ताले सेही जगह रे तारो इंटरेस्ट रे पड़िबो पिले तापरे नोट 1 एठी द रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट शैल बी इश्यूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल तहसीलदार फॉर द एबव पर्पस एदि पई कम से कम तहसीलदार लेवल रो जने ऑफिसर को द्वारा तुमको रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्रदान करा जायतिबार आवश्यकता अछि तापरे आला पिले बैंक नोडल बैंक कोटा देखो नोडल बैंक होची द स्कीम शैल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मने रखिया पिले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हिच इज नोडल बैंक ऑफ केएसएसवाई तो स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे ही हमें ए लोन टा अवेल करि परिबा जेहेतु ताहा केएसएसवाई सहित लिंक है कि अछि तापरे आला पिले मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कोन अछि द स्कीम विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू द स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल okay and with payments made through the direct benefit transfer dbt तमर अकाउंट को सीधा पैसा जीवो मोड फॉर मोर क्लैरिटी implementation process refer to the modalities next आइला disbursement disbursement केमते होबो पिले the interest subsidy claims made by the nodal bank on behalf of loanee students shall be directly disbursed to the education loan accounts of the beneficiaries on dbt mode through state scholarship portal state scholarship पैसा जेमती पडुची तमरा पैसा भी से लोन भी सेमती पडिबो next it is the sole responsibility of 10 lending bank to claim interest subsidy on behalf of eligible beneficiary on yearly basis the bank तार interest claim करिवो गवर्नमेंट पाखरे तमरो किछि काम नाही mode of repayment एठी कोन अछि केमती पैसा फेरेबो तमे you know the total period of repayment of the loan shall be restricted to tenure of 15 years 15 वर्ष भितरे पैसा पेमेंट होबो and the account should be standard student shall start repaying the EMI just after completion of the moratorium period सरला परे पैसा तमरो दबार अछि next temporary default in repayment of loan to a period of 90 days is permitted for payment of interest subsidy so 90 दिन तुमको माने with interest
तमे दे परिबो 90 दिन इयाडे सियाडे हेले भी चलिबो किसी असुविधा नहीं. The interest subvention towards penal interest, if any charged by bank for the default period, will not be borne by the government. The default ए जो default period लगे यदि interest लगेगा बैंक ताहले government पैसा दबो नहीं. Number 3, if any default in repayment of loan beyond 90 days is corrected by the borrower through repayment of arrear interest and principal, and the NPA becomes a standard account, the benefit of interest subvention will apply from the date when the bad loan NPA gain on standard. तो ये केस रे कौन हबो जदि तमे पैसा दबो नाही ताहेले सेही जगह रे से माने मन इच्छा इंटरेस्ट लगे दे परिबे प्ले. The earlier resolution dated 10/8/2016 subsequent corrigendum dated 3/10/16 ये सब चेंज है कि ये नुआ माने नियम लागू हैला बोली कि एठी लिखा जाईची. एवं शेष पॉइंट देखो, in case of any doubt on any provision of this notification, the matter shall be referred to the government and the decision of the government in higher education department shall be final. जदि कोनोसी डाउट होची कोनोसी असुविधा होची गवर्नमेंट को सीधा हमें चिट्ठी भी करि परिबा. Okay, that's all. Stay tuned, Master of English. Jai Jagannath.